So we were talking about valid requirements, okay, of a custom. So हमें देखिलु different valid requirements कौन. Okay, so what is the last part which you had taken down? Last point टा कौन लिखतिले? According to the passage, the message of the Upanishads was what we perceive or conceive, a projection of our minds and the universe and nature, and the soul and body and mind, the transcendent and the immanent are all essentially one. इटा last टा थिला. Yes, sir. Last हमें पढ़िथिलु it must not be opposed to law, right? Custom जोटा custom should not be opposed to law. That is the last point na which we had studied. सेतिकिरे हमें stop करथिलु. Now we have to go to proof of custom. Right? वो जो theory class कथा कहूची, not the case law. Case law तो मु theory टा सारला परे then I will go to the case law. Okay, so now we come to proof of custom. Okay, so let's say हमें कहबा कि गोटे custom अछि. Okay, there is a custom. बहुत वर्ष होला चली आछि. Okay, but सेथरे हमें एथरे देखिछु ना that it should not be opposed to law, it should not be opposed to public policy. ए सब दिन छोड़ा रही बस सेथरे. But suppose गोटे custom बहुत हजार वर्ष होला चली आछि. Okay, ठीक है, outdated भी अछि. But legislation द्वारा से custom को आपण change करि नांत. Okay, legislation द्वारा से custom टा change हेइनी. ताले will that custom, okay, will it still be valid? Okay, जोटा कि आज हमें जो 12टा ना 13टा case laws देखिबा. Okay, सेथरे हमें देखिबा whether it is valid or not. It is valid. जदि जो पर्यंत ताकू आपण by law change करू नांती, by legislation change करू नांती, it will remain valid से जेते पुरुड़ा भी हे थाउ. Okay, so that is the concept. बुझि पारले. So next, take down the heading proof of custom. Let us finish the chapter first. Okay, proof of custom, types of custom. Okay, segura में just सारिला परे. Then we will go to तो एटा हमरो कोन जोटा कि ancient sources. Okay, कि customary law जोटा से ता सरीबो आपनकर ancient sources of Hindu law. Okay, as I told you, the best way is to, after finishing a chapter or a significant part of a chapter, जेमति कि एटी sources of Hindu law रे हमें देखिलु कोन हमर ancient sources अछि. Okay, आउ modern sources अछि. तो ancient sources सारिला परे से ता related जेति कि case law अछि तार गोटे आपण discussion कर देबे. Okay, तो Hindu law रो chapter 1 रो मु आपन को provide कर देछि case law list ता ताकू आज मु एटा सारी की discuss करिवि. ठीक सेमति for all the subjects that you are studying, the same approach, okay, is required, right? So that I'll be providing you slowly chapter wise, okay, case law list chapter wise. A chapter le apadangara. So for example, now you are studying constitution, torts भी आपण पढुचंती, एपटे CPC भी पढुचंती. तो accordingly chapter wise सेटा देखिबा. आउ टिके current affairs संगे current affairs ने legal current affairs even आजिरो भी जिंसटा, okay, सेटा भी टिके मनरे रखंतु. एबे तो constitution चलछि आपण सकाळे. Can you tell me, any one of you, can you tell me what is this Hurrah versus Hurrah case, okay, related to constitution? काहे कि मु पचारली ना आजी सुप्रीम कोर्ट led by our CJI ताका बेंच टा जो कश्मीरी पंडित्स माने जो अछंती तांकर गोटे थिला गोटे पिटिशन कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गोटे करी कि जो तांकर सब मर्डर्स हेतिला कश्मीरी पंडित्स को अगेंस्ट रे. तो सेटा ताकू आउथरे रिवाइव करा जो सेतरा आउथरे ताकू केस ओपन रीओपन करा जो. आगुरु भी सुप्रीम कोर्ट एटा मना करथिले. Okay, for various grounds, but it needs to be remembered that that भी पुराना केस, that is 1983 रे जो एंटी सिख रॉयट्स हेतिला से केसेस गुडा ओपन करा है कि रिट्रायल है कि से जो परपेट्रेटर्स जो माने सब थिले तांकू, okay, they have been ताको अगेंस्ट जा करया कथा कोर्ट्स करिसंती. This is more relatively recent, 1990s रो कथा एगुडा.
Kashmiri Pandits ko against jaha sabu heitila. So anyway, तार तो history बहुत बड़ा. If you are interested, you can go through that. But ajiro particular case रे कौन है ना the Supreme Court रो bench जोटा led by the CJI से कहले कि नहीं हमें इधर कौन सी merit देखुनु, okay, as per the principles of Hura versus Hura. ठीक है. So ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏ ହୁରା versus ହୁରା କେସଟା କଣ କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଯାହାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସ୍ପେଶାଲ ପେପର ଥିଲା ଆଗରୁ ଏନିୱାନ୍ ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟା ହୋମୱାର୍କ ଲେଖନ୍ତୁ ସାଟରଡେ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ତ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଓକେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍ ହୁରା versus ହୁରା ଓକେ पूरा नाम मने पड़नी रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा ना अशोक हुरा वर्सेस रूपा हुरा समथिंग हुरा वर्सेस हुरा आपण देखंतु व्हाट इज दैट केस एंड व्हाई द कोर्ट टुडे सुप्रीम कोर्ट टुडे मेंशन दैट मात्र 4 लाइन रो ओके ऑर्डर टे दिया हिच मात्र 4 लाइन से तो लिखा हिच कि एतरे किछि प्रिंसिपल जोडा हुरा वर्सेस हुरा रे दिया हिच तो से हिसाब रे एटा किछि मेरिट से एतरे किछि नाही ओके एनीवे सो टेक डाउन द हेडिंग प्रूफ ऑफ कस्टम ओके तो गोटे कस्टम अच्छी बोली आपण प्रूफ केमती करिवे त किछ तो बाटो थिबो मु कहबी भाई मो कम्युनिटी रे एटा हला कस्टम प्रूफ केमती करिवी बहुत गुडे कस्टम रो डॉक्यूमेंटरी प्रूफ नहीं ठीक अछि ताले ताको हमें प्रूफ केमती करिवा जो जे कहूची कि मोर कम्युनिटी रो एटा हला कस्टम हाउ कैन यू प्रूव इट ओके सो टेक डाउन द हेडिंग प्रूफ ऑफ कस्टम ओके सो आर जनरल कॉन्सेप्ट हैला कि जे कहूची कि एटा गोटे कस्टम मो कम्युनिटी रे मो रिलीजन रे ओके तो सी ही प्रूफ करिवे सेटा बर्डन ऑफ प्रूफ तारी ऊपर अछि जे कहूची कि एटा मोर गोटे कस्टम ठीक अछि सो he has to prove that in a court of law ठीक अछि so all the customs which are like which you say that these are customs they have to be proved okay so first point lekhantu burden of proving a custom is on the party who alleges it the burden of proving a custom is on the party who alleges it okay so तांको ही सेटा प्रूफ करियार अछि okay so को case रे okay court will consider that okay this is a custom right so take down the court will take judicial notice of certain customs the court will take judicial notice of certain customs in the following cases okay so a case re courts they will take judicial notice of the custom and say custom da so na accept karibe okay that is kind of a custom the courts will agree with that so first point देखो जदि गोटे टाइप रो कस्टम सबु बेले ओके दैट इज बीइंग ब्रॉट टू द कोर्ट्स नोटिस कि एटा गोटे कस्टम पुनी गोटे आ गोटे केस आसिला जोतरे सेटा पुनी गोटे कस्टम बोली कि गोटे कहूची पुनी यू नो देयर आर मल्टीपल केसेस जोतरे कि सेम जिंसटा गोटे कस्टम होया हुआ जाउची ओके सो नंबर 1
When a custom is repeatedly brought to the notice of the court, when a custom is repeatedly brought to the notice of the court, okay, when a custom is repeatedly brought to the notice of a court, the court may hold the custom proved. The court may hold the custom proved without any necessity of fresh proof. Without any necessity of fresh proof. Okay. सर सेकंड पार्ट आउ थे रिपीट कर देबे द कोर्ट में. When a custom is repeatedly brought to the notice of the court, Yes the sir. court may hold the custom proved without any necessity of fresh proof. Okay. When a custom is repeatedly brought to the notice of the court may hold the custom proved without any necessity of fresh proof. एठी हमको अंडरलाइन कौन करियार अछि, माइंड रे कौन रखियार अछि, रिपीटेडली. ठीक अछि तो मल्टीपल टाइम सेमति किछि लिमिट नाही, 2 थर आनी 10 थर आनिबो, ओके 50 थर आनिबो, बट रिपीटेडली इट इज ब्रॉट, ओके, to the notice of the court. So the court may, consider that, okay, this is a custom, ता पई किछि प्रूफ दरकार नै. जदि ए केस टा न हैला, बाकी सबु केस रे, ओके, जस्ट नॉर्मली जेमति आपण फैक्ट्स प्रूफ करचंदी कोर्ट सामने रे, सेमति कस्टम टा को भी प्रूफ करिया पे पड़ियो. तार बहुत बाट अछि केमति आपण कस्टम टा प्रूफ करि परिबे, जोटा हमें देखिबा गोटे गोटे करी. ओके, सो एटा हला फर्स्ट. जदि रिपीटेडली that custom, okay, is brought before the court, that this is a custom, okay, so tahale seta without any proof the court, okay, may accept that. Jodi if you ask me question sir kette thara hoba darkar, right, kette thara hoba darkar, how many times the repeatedly कहला ना, तो repeatedly माने kette 5 10 15 20 100 more than 100, okay, सेमिति किछि hard and fast rule kichi nahi. Okay, if the court thinks that it is numerous time enough, okay, tahale se seta oda custom hisab re mani paribe, right. So otherwise apan kon karibe na, you have to prove it through instances. ei case re, okay, it is a custom, apan dekhebe proof karibe. एमती केते गुडे इंस्टेंस आपन को दब पड़ियो, केतोटी इंस्टेंस देबे, दैट इज आल्सो देयर इज नो, ओके, कि 5 थर हितिबो 10 थर हितिबो सेडा किछि नाही, नो हार्ड एंड फास्ट रूल इज देयर, राइट. सो एटा हला फर्स्ट. जदि रिपीटेडली इट हैज बीन ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, ताले कोर्ट विल कंसीडर दैट इट इज, ओके, ए कस्टम. नहले you have to just like it any other, okay, fact which is proved before a court, eta could be. Otherwise all customs are to be proved like any other fact. Usually custom is proved by instances, okay, so seta hala second point. Otherwise all customs are to be proved like any other fact. Jodi repeatedly ana hini court ro notice samna re, okay, court samna re ana hini, tahale seta court again, okay, the जे क्लेम करूची एलेज करूची एटा हला गोटे कस्टम बोली सी प्रूफ करिया पे पड़िबो, ओके, जस्ट लाइक एनी अदर फैक्ट इज प्रूफ. एंड सेकंड पार्ट कहला रो यूजुअली कस्टम्स आर प्रूव्ड बाय इंस्टेंसेस, ओके, यूजुअली कस्टम्स आर प्रूव्ड बाय इंस्टेंसेस. Usually customs are proved by instances.
Again the same question, how many times, kette thara instance hoga to 5 thara 10 thara 50 thara, hard and fast rule nahi. Okay, semti kichi hard and fast rule nahi ki ette thara hoba kotha, right? So next, number 3, custom can also be proved otherwise. ता अर्थ कोन, आपण एटा भी प्रूफ कर दे परिबे कि एटा कस्टम नुह. Opposite here, a custom can be proved otherwise also. Okay. A custom can be proved otherwise also. Next point, sir. Point number 3. Okay. Now come to point number 4. So point number 3 is custom can be proved otherwise also. How को बाटरे हमें गोटे custom को proof करि परिबा. Okay. So through records. So if there is a record of custom, okay, जोड़ा कि किछि public record रे अछि, okay. So let's say amaro जदि हमें public record रो history देखिबा, ancient India रू अछि हमरो public record रो history. कोठी pillar edict रे, कोठी rock edict रे, okay, तापरे copper plates रे, okay, तापरे एतले paper आसी गला, paper रे भी, okay, manuscripts, palm leaves, सेथरे सबु लेखाई की रखाई छी. ठीक अछि. और जदि सेटा आपण प्रूफ करूचंती, right? So that is also acceptable. So record of custom can be used for proving a custom. Record of custom can be used for proving a custom, and that record may be very, okay, ancient. Generally public records are accepted, but also private records can be accepted. Private record mane kon, dharantu for example se British, okay, se tankar kichi records ki gote private collector rakhichhanti, private person, okay, and that taku aniki apna court re produce koruchanti, ta authenticity garika verify he jauchi, tahale bi that is also acceptable. ठीक है. So record of custom can be used for proving a custom. Eta hala point number 4. Okay. Record of custom can be used to prove a custom. 4th point like how to prove a custom. Okay. Then let us go to the various other ways. Okay, how you can, how किसी जदि बाटा अछि जतरे कि हमें प्रूफ कर परिया केटा कस्टम की नुह. Okay. Next, use of digests. Use of digests. Say point रे लिखंतु. Okay. Kana एडा basically हमें कहूचु कि what a proof of custom hela kono na record of the custom. Okay, so that record can be any public record. Say point re lekhantu. Okay, digests and manuals can be used for this purpose. Okay, so digests and records right, so can be used to prove a custom. अच्छा, तो already first time देखियो जे allege कला कि एटा गोटे custom से काई से allege काई करछि, तार main intention ता कोन, anyone who can say someone is saying that this is, you know, my custom, mo community re ki mo religion re eita gote custom. See actually the aim ta kon jota ame jodi relate kariba previous classes ku, why is someone claiming that this is my custom?
Yes, to continue that custom. In other words, he does not want to be governed by Hindu law. Exception se चाहूँगी Hindu law रे govern होगा पे से देखो कि मो custom है तेणु मुझे तेरे govern भी Hindu law रे है भी नहीं तो ताको एटा proof କରିବାକୁ पड़िବ ए जो चारटा हमें देखिलु steps or processes or these 4 types. He has to prove it to the court that their custom is related to his community or religion. Jabi jodi se proof kari paruni ताले Hindu law will apply on him. So that is the thing, right? So last रे गोटे, this is not the 5th point. तो एई चारिटा points रे हमें कहि परिबा केमिति हमें custom टा, okay, how custom has to be proved, right? So next, the burden of proof is on the person who asserts the custom, and if he fails to prove it, he will be governed by Hindu law. Okay. तर assertion रो कारण टा सेया कि से चाहुनी कि तार कस्टम किछि अलगा अछि और से चाहुनी कि से सेटा ओके हिंदू लॉ रे गवर्न हो बोली बट ही हैज टू प्रूव दैट टू द कोर्ट. Okay, so the burden of proof is on the person who asserts the custom, and if he fails to prove it, he will be governed by Hindu law. The burden of proof is on the person who asserts the custom, and if he fails to prove it, he will be governed by Hindu law. Okay. So next, take down kinds of custom. And the custom is what are the different types of custom according to personal law. Okay, so number 1, local custom. So local custom is endemic to a particular place. Okay, so take the heading kinds of custom. First chala local custom. So endemic to a particular geographical location for example, let's say Amaro, there will be certain different, let's say, let us take a political unit, Odisha. Eti amaro Western Odisha re, okay, there are certain customs which are endemic to that particular geographical location. About let's say Bargad re apanଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ custom thibo जोटा कि एपटे भुवनेश्वर कटक रे नथिबो एठी केटा custom thibo जोठी कि let's say Sambalpur, Raurkela, okay, Brahmapur, Gajapati सेठी नथिबो ठीक अछि. So there are certain customs which are specific to a geographical area, and if we extrapolate it, से geographical area रे कोन होची किछि गोटे particular community रहउचंदी से सेठी में भी किछि गोटे particular tribe रहउचंदी, okay, to a particular geographical location, right? And that also would mean that particular community, okay, right? Geographical location, comma, particular community, etc. So it is a local custom, right? So these are specific to one particular community, one particular, okay, geographical location. So ये है first type of custom, first kind of custom, that is your local custom. Okay. Second type of custom, that is your family custom. As the name suggests, it is basically related to the members of a particular family. ठीक है, and it will obviously will be applicable only to the members of that family. So तांकर ऊपर लागू होगा ना, family custom तांकर, right?
So local custom रे गोटे community की गोटे geographical location रे जो माने रहउचंती से माने दे गोटे बहुत बड़ एरिया इन द सेंस कि बेसी लोक थिबे सेते कारण that is related to a geography or a community. Okay, generally geography हमें कहि परिबो ठीक अछि, but here family custom सेटा टिके only based on the families. Okay, गोटे particular family आउ सेटा सेही family रो members उपरे okay लागू होउछ. So as compared to the first one माने local custom को आपण जदि चाहुचंती ताकू किछि चेंज करिया पई कि abandon करिवा पई okay it is little bit difficult in case of a geographical custom or local custom काना एते लोक फॉलो करथिबे किछि लोक छाड़ दे पारंती ओके समस्त छाड़ी परिबेन राइट तेणु सेटा तार कंटिन्यूएशन टा प्राय ग्यारंटीड थाए लोकल कस्टम रो बट फैमिली कस्टम रे कोन जदि गोटे जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को सेटा प्रॉपर्ली पास ऑन न कला किंबा नेक्स्ट जनरेशन ड्यू टू सम रीजन सेमन तक अबैंडन कर देले टेक एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ओके लेट्स से पार्टीशन बेले ओके एपटे इंडियन साइड ऑफ पंजाब रे किछि फैमिलीज रहउतले तांकर गोटे आगु ट्रेडिशन थिला कस्टम थिला जाबी बट आपणकर जेते बेले पार्टीशन हैला दे वेंट टू पाकिस्तान साइड रो पंजाब को से माने गले सेठी गला परे ड्यू टू द सोशल रीजंस एंड ऑल तांकर कस्टम्स रो डिफरेंट रहला ठीक अछि त सो एज कंपेयर्ड टू योर ओके local custom your family custom okay can be easily abandoned or changed okay so example से थरे अपन नहीं परिबे right so first you take down family okay customs so it is relatively easier okay it is relatively easier to break it or to abandon it okay got it तापरे नेक्स्ट जदि हमें हाँ एग्जांपल्स ता दे लिखंतु एग्जांपल्स succession by rule of primogeniture succession by rule of primogeniture PRIMOGENITURE succession by rule of primogeniture केते फैमिलीज रे कोन थाए ना ताकर एमती फैमिली कस्टम थाए कि जे बड़ पुओ कि जे फर्स्ट बॉर्न थिबो ओके ताकू टिके अधिका किछि मिलिबो ओके Vedic families रे basically it is in the Vedas also it is mentioned okay आउ जत्ते बेले भी अपन देखिबे Vedic families रे जत्ते बेले parents करो डेथ होची ओके तांकर जत्ते सबु रिचुअल्स करिका थाए सेथरे जे बड़ पुओ जे थाए तांको रोल टा अधिका थाए at that time जदि से मानी की करूचंती सब जिंस तो bodily pain जोटा नबा पई पड़े that person has to take okay and it is there in the Vedic literature कि सही हिसाब रे तांकर responsibilities duties और rights relatively अधिका एटा customary law कहूची not codified law not modern law okay so that is called primogeniture means the first born so succession by rule of primogeniture बड़ okay बड़ छे right so example Sir, हाँ कोंतो sir, as like you told before one to second point, sir, the court, that means the custom should be repeatedly brought to the court, sir. In case of family if customs, it is repeatedly brought to the court will accept it okay the court will accept it without any proof okay. That understood, sir. Sir, I'm asking about how it will be proved in case of family customs, sir. Because only let's take 10 to 20 people are there.
Hmm. And I don't think they will take, much more cases will be in single family, so they will take this case No, no. repeatedly to the court. Family customs, generally, what the karta basically says is generally accepted, and they would be having some family records, right? Because all these things are written. Okay, all these things are written, right? In their family records itself, right? So that can be proved, like what happened before this generation and before that generation, right? There would be some written records. Okay, suppose written records are not available, right? Suppose written records are not available. So as per, like we will study later, as per the rights conferred on the karta of the family, basically if he tells in the court that other proof is not there, okay, then what he says basically would be taken. Okay, that is if you are going according to the customary law, right? Nowadays mostly it is done according to the codified law or modern law, right? Since we are taking the example of family customs, we are giving this example of succession by the rule of, okay, primogeniture, right? Understood, sir. Okay, earlier what used to happen, like you people, some of you have the habit of writing diary, okay, to write what has happened in your life every day. Similarly, for a family, okay, but if you go to the sociological concept, okay, so there is something called a kula, okay, which is the family basically. So there is a chronicle of the kula, right? Like who was the, like when it started, and who was the first man, the second man, the third man, the generation in that case, because it is required even in the Vedic rituals. Okay, if you observe in many of the pujas and all, they'll ask you what is the name of your, or what is the gotra of your, okay, father, okay, his father, in that sense they'll ask you, right? So generally it is expected that these things are kept, okay, with the family in a written format. Understood? So that is family custom, right? And the third type of custom, that is caste or community custom. Okay, so this is much bigger than the local custom and the family custom. Caste or community custom, very difficult to change it, very difficult to abandon it. Okay, so caste or community okay, so everyone who is a member in that caste or community is expected to follow it. Okay, so it is generally binding on all members of the caste or community. Okay, so and this is for different communities, there will be different customs, right? So this is caste or community custom. So the most difficult to actually, okay, change, the most difficult to change. The easiest to change is the family custom, and local custom is between these two. Okay, so three types of custom as per personal law. If you just further divide local customs, you also have guild customs. Okay, guild, you know what is a guild? A guild is a association of merchants. Okay, a guild is a association of merchants, right? Traders, business people. So they will be having their guild, and their some customs will be there in the guild. Okay, so but that is not a part of personal law. It is more or more related to business. Okay, so in personal law we will be, you just have to know these three. There are the local customs. Okay, then there are the family customs and the caste or community customs. Okay, so this is basically, we complete the ancient sources of Hindu law. Okay, so next, before going to modern sources of Hindu law, that um, particular PDF which I had given you, okay, I will project that, and we will discuss those 12, 13, whatever cases, okay, was there, so that when you write the answer, okay, you will quote it depending on what question is being asked. Okay, so I will also tell you which case to quote,
Okay, in which question, right? So let us go there. Those who have that, all of you have that I had given in the group, so you can just, okay, take it up. You make a separate folder for this, okay? For every chapter in your personal note, you should include them. Okay, so here the chapter is this. This is basically preliminary chapter, sources, who is a Hindu, etc. And it is arranged chronologically. Okay, so first case come to case number 1, 1868. Okay, that is the case 1868. That is collector of Madura versus Muthu Ramalinga. Okay, 1868. So under the Hindu system of law, clear proof of custom will outweigh written text of law. Okay, so this is pre-independence. That is why it has said. Okay, clear proof of custom will outweigh written text of law. Right, that means even if some legislation, some law has been made by the British, and clearly one is able to prove that this is a well-established custom, custom will outweigh the written law. However, a custom opposed to statutory law cannot be given effect. So if statutory law, a law which has been brought through legislation, through statute, okay, so it cannot go against that. But written text of law, okay, that means it is discriminating between non-statutory law like executive orders, etc. Okay, so that can be, okay, overridden by custom, but statutory law cannot. Okay, 1868, collector of Mathura versus Muthu Ramalinga. Sir, could you repeat it again, sir? The name of the case. Yes, sir. Yes, sir. You are not able to see it. I have already given that in your group day before yesterday. The PDF I have already shared in your group. You can just download and refer. Okay, it's already there in your group. You, because it is there in your group, you need not take it down once more. Okay, it will save us time, right? Because 14 cases are there. Now we have to discuss each case, 14 or 12, whatever is there. Okay, just to repeat it, this is a pre-independence case. In fact, this is the only pre-independence case in this chapter. Okay, collector of Madura versus Muthu Ramalingam. This is 1868 case, where basically it is being said that if it is proved, okay, clearly it is proved that this is a valid custom, that custom will outweigh written text of law, but not a statutory law. Okay, anything which is against statutory law, any custom, that cannot be given effect. So you can ask, what is then this written text of law? At that time, if you see, okay, this viceroy or what is this? Governor General, he had executive council, okay, he had legislative council, right? So legislative council would make the laws, okay, and executive council earlier, that was also considered as a lawmaking body. Later on, that executive and legislative council were separated. So it's by any executive order, etc. Okay, that can be overridden by the custom. Okay, but not statutory law, right? So that is case number 1. Now come to case number 2. This is 1951, Gurunath versus Kamlabai. So here the Supreme Court held that in absence of any rule of Hindu law, the courts have authority to decide cases on principles of equity, justice, and good conscience. If you remember the class before, I think 1 or 2 classes, when we had made that diagram related to sources of Hindu law. So under modern laws, okay, modern sources of Hindu law, okay, you remember what you have written under the modern sources of Hindu law? Okay, if you remember,
one part was there, the legislation was there, and one part was this. Okay, yes, that is equity, justice, and good conscience. Okay, so where in a particular case, in a particular matter, there is absence of any Hindu law, okay, then the court can decide in that case according to principles of equity, justice, and good conscience, but it should not be inconsistent with any doctrine of theory or theory of Hindu law. Okay, so court can, because it's just like nowadays what we have in the 7th schedule. Okay, so from the 7th schedule point of view, what we call residuary powers. Okay, something which is not there in the 3 lists, right? It's not there in the union list, it's not there in the, okay, state list or concurrent list, then it is residuary power. Okay, it's a residuary subject, so the power is with the parliament. Exactly like that, if nothing has been mentioned in the Hindu law, then the court can decide. Okay, but courts have to keep in mind that any established doctrine of the Hindu law should not be violated. Okay, that is 1951 case of Gurunath versus Kamlabai. Okay, next we come to case 3. That is Golak Chand versus Praveen Kumari. This is 1952. So it is given in a chronological manner, means starting from the earliest case to the latest case. Okay, so apart from the landmark cases तो obviously हमें दबा ही. Apart from the landmark cases, it is very important that we use, okay, the recent cases. तो एठी गोटे केस अछि हमें देखिबा लास्ट केसटा सर 2020 रो, ठीक अछि, तो ताको भी आपण इंक्लूड करिया भी चेष्टा करिबा, ठीक अछि. ऑब्वियसली गोटे आम आंसर लिखुछु 15 मार्क्स की 10 मार्क्स की 25 मार्क्स नहीं, तो ऑब्वियसली हम पाखे तो एते समय नहीं, ओके, कि हमें 4टा केस लॉ दबा से तरे. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. सो सबुटु लैंडमार्क केस लॉ जोटा अछि से क्वेश्चन संगे रिलेटेड रेलेवेंट जोटा सेटा देबे, प्लस रीसेंट केस लॉ जोटा आपण जानछन. लेट्स से मोस्ट ऑफ यू विल बी अपीयरिंग इन 2022, ताले 2020 21 और जब 22 हबो तो आउरी भलो. ओके, तो से केस मते गोटे दबार अछि. सो गोटे लैंडमार्क केस जोटा ही almost established with that particular question, ता संगे पूरा रिलेटेड है कि अछि. ओके, at the same time, okay, you have to have this recent, jette recent habo sette bolo, ता माने आपण proper, okay, पढी चंदी से जिनसटा, राइट. अब सेथि पय मु कहूची इट इज वेरी इंपोर्टेंट कि एबे कोन कोन होची कोर्ट रे. ओके, सुप्रीम कोर्ट कोन कहूची डेली बेसिस रे, यू शुड नो दैट लिटिल बिट, केना सेतर बहुत क्रॉस रेफरेंस मिलियो. किंतु आजि का केस रे, ओके, जदि आपण सेटा पाइले तो यू कम टू नो अबाउट हुरा वर्सेस हुरा, जदि आपण सेटा जानि ना, इट इज वेरी बहुत ही गोटे इंपोर्टेंट केस, राइट. सो दैट इज द थिंग. आ से टाइम गलानी जोटी कि आगुरु जेमति होतला ना, माने आपण को किछटा 15टा 20टा क्वेश्चन आपण कर देबे. ओके, गोटे स्टैटिक नॉलेज बेस रखी कि आपण जिबे, मे बी मेंस रे जा हबो, बट इंटरव्यू रे तो एथर को जेमति क्वेश्चन सब पचार चंती, you need to be updated with legal knowledge. Okay, legal current affairs आपणकर especially supreme court कोन changes होची सेगुडा आपन properly जानिबार अछि. With technology in your hand, it is not very difficult. टिके समय खाली दबार अछि. Okay, anyway, so case number 3, this is Golak Chand versus Praveen Kumari 1952. All that is necessary to prove is that eta खाली case number 1 टा, ओके, छाड़ी देले बाकी सब सुप्रीम कोर्ट रो केस. केस नंबर 1 टा हमर प्री इंडिपेंडेंट केस टा. ओके, सो ऑल दैट इज नेसेसरी टू प्रूव इज दैट द यूसेज हैज बीन एक्टेड अपॉन इन प्रैक्टिस फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड एंड विथ सच इनवेरिएबिलिटी टू शो दैट इट हैज बाय कॉमन कंसेंट बीन सबमिटेड, ओके, टू एज द एस्टैब्लिश्ड गवर्निंग रूल ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेलिटी. ओके, रूल एटा म्यूले इज रूल ऑफ, ओके, रूल ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेलिटी. ता माने कोन जोटा जिनसटा एबे हमें जस्ट देखिलु कस्टम्स. ओके, हाउ टू प्रूव ए कस्टम, ठीक अछि. तो से कस्टम टा केते वर्ष पय थिबो, लाइक लास्ट क्लास रे हमें देखिदिलु केते जगह रे कोइतला 40 इयर्स केते जगह रे, बट जनरली इंडिया रे तको 100 इयर्स कंसीडर करा जाउछ. ओके, जोटा हमें देखिलु द सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस रे साउथ इंडिया रे. ओके, रिमेंबर दैट केस, सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस को ओनली 25 इयर्स हेतिला. तेणु सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस जोटा कि पेरियार स्टार्ट करथिले ईवी रामास्वामी,
से सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज को गोटे कस्टम हिसाब रे मद्रास हाईकोर्ट मानिलानी कहना मात्र 25 वर्ष होइतिला ओके तेणु से हिसाब रे से कस्टम हिसाब रे मानिले राइट सो से जिनसटा कहउची all that is necessary to prove is that usage has been acted upon, means it has been in practice, it has been used for such a long period and with such invariability. ता अर्थ कोन गोटे पर्टिकुलर लॉन्ग टाइम पर्यंत धरंतु 100 वर्ष सेटा हैला लॉन्ग पीरियड इनवेरिएबिलिटी माने कोन प्राय से कम्युनिटी रो जेते लोक ओके समस्त से कस्टम टा फॉलो करछन सपोज से कम्युनिटी रे 1000 लोक अछन ता भितर मात्र 20 टा फॉलो कले तो ता माने तो सितर बहुत वेरिएबिलिटी हे गला राइट ऑलमोस्ट एवरीवन हैज टू फॉलो दैट इफ नॉट एवरीवन बुझि परले तो इनवेरिएबिलिटी कथा से सेत पई कहला as to show that it has by common consent been submitted as the established governing rule of a particular locality okay so अच्छा एटा कथाटा हला कि आमे कोन एई भाषाटा ही लिखिबा कि आंसर रे ना आपण जनरली भी लिखि परिबे ठीक अछि that in this particular case the Supreme Court said that okay or held that right that the period has to be period of practice okay has to be long enough and invariable okay and by common consent the community should accept it as a custom ठीक अछि तो निज लैंग्वेज भी लिख पारे बट द सब्सटेंस हैज टू बी सेम एग्जैक्टली जा इट लिखाई छी सेटा आपण घोषिया दरकार नै अंडरस्टूड थर्ड केस टा बुझियला ओके को जगह रे एटा लिखा हबो कस्टम टा ओके केते लंबा हेले कि केते दिन पर्यंत सेटा आपण जदी ताको ओके प्रूफ करि पाउचंदी ताले सेटा कस्टम रहिबो ओके जोटा हमें देखिलो बे वैलिड कस्टम कोन आउ केमती आपण प्रूफ करिवे राइट तापरे केस नंबर 4 को आसंतु दैट इज सरस्वती अमल and Jagdamba. Okay, that is 1953 ro case data. Custom cannot be extended by analogy. Eita actually सेठी जो हमें how to prove a custom थिला में चारटा पॉइंट लिखि दिलु write this as the first point. भूली गली एटा कहया पे custom cannot be extended by analogy. ता अर्थ कोन एई सिचुएशन रे एटा करा हिच ओके ताहले ताको आपण एनालॉजी रे ओके जदी सेही हिसाब रे ताले सिमिलर टाइप रो गोटे सिचुएशन रे जोटी किछि चेंजेस अछि सेम टाइप रो जिंस होबा कथा ना सेटा होबनी ओके एनालॉजी माने बुझुछन तो जो आपण एग्जाम रे आपण यू नो गोटे जिंस को देखि कि सिमिलरिटी की देखि कि आ गोटे आपण कंक्लूजन नौछन ओके सो लेट्स से आपण कहबे बैट इज टू बॉल तारा एनालॉजी हला कि आपण बैडमिंटन ओके रैकेट जदी कहला ताले आपण कॉर्क कहबे ओके दैट इज द एनालॉजी रो एग्जांपल तो सेटा इठी काम करिवन custom cannot be extended by analogy it is not a matter of theory but a fact and cannot be established by theoretical generalizations or priori method science रे technology रे ओके priori method ता यूज वे माने approximation method एटा ठीक अछि generalization ओके जदी जेमति कि इंडक्शन रे हम यूज करू गोटे फार्मूला सेटा ठीक अछि कि नहीं ताको हम जदी देखुछु तो 1 गोटे वैल्यू पकोछु तापरे n गोटे वैल्यू पकोछु n+1 n+2 एमति हम ओके सब तरह से चालछि कि नहीं सेटा देखु तो सेटा ए जगह रे हबनी इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय एनालॉजी ओके सो इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड सेटा द प्रैक्टिस ऊपर ही ओके डिपेंड करूछि एंड इट इज नॉट okay it cannot be generalized from theory okay so that is case number 4 now come to case number 5 okay that is Kripal Singh versus Bachchan Singh 1958 under Indian law custom is a question of fact and the burden of proof is on the party who relies on the custom okay je kohuchi ki eta la custom se proof kare which we have seen already there is no presumption that a particular person or class of person is governed by custom ओके तो जनरल प्रिजम्पशन जंती किछ रहबनी सी प्रूव करबो कि सेटा कस्टम आ मो कम्युनिटी ओके कि मो ग्रुप मो रिलीजन सेतरे गवर्न होउछ राइट दैट इज कृपाल सिंह वर्सेस बच्चन सिंह एटा है फिफ्थ केस ओके नेक्स्ट कम टू केस नंबर 6 चंद्रशेखर वर्सेस कुलंदेवाला दैट इज 1963 रे एटा ऑलरेडी हमें नोट रे भी हमें लिखितलु ओके सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बुद्धिस्ट Jain or Sikh by religion is a Hindu if he practices, professes or follows any of these three religions. Okay, that is Buddhism, Jainism or Sikhism. And he remains a Hindu if he does not practice, profess
or follow the tenets of any of this religion. A person does not cease to be a Hindu if he becomes atheist or dissents or deviates from central doctrine of Hinduism or lapses from orthodox practice of Hindu religion or adopts Western way of style. So first, second class re ame details about this is related to this particular case. Ame aur bhi taro case dekhtilu kono na a Hindu who consumes beef is also considered as a Hindu. Okay, so jodi beef ro consumption karuchi, which is forbidden in many of the shastric texts, okay, still then he is considered as a Hindu. Jota last week wala ki if he deviates from the central doctrines of Hinduism, okay, or lapses from orthodox practice, जो orthodox Hinduism रो जो practice टा अछि ताको से छाड़ी दउछि, okay, किंबा western way of life से adopt कला. आमे तो आगु को भी देखि दिलु कोन, if you remember, a Hindu who is practicing even other religion आउ गोटे फेथ को practice करछि ताहेले भी ताको हिंदू हिसाब रे अपन नउछन्ति. Okay, so case number 6, okay, 1963 रो एटा. In 1965 percent, this again, this is a very important case which we had seen, the Muldas case. Okay, so Yagya Purushdashi ji versus Muldas, 1965. The Supreme Court accepted the distinguishing feature of Hinduism as evolved by Tilak. Okay, कौन तीनटा जिनसे से कहते First, acceptance of Vedas with reverence. Okay, so a person who is a Hindu accepts the Vedas. Eta hela kono, eta tara more theoretical or philosophical approach ta, because we have already discussed that from the legal point of view, jaako apna Hindu kohchandi, especially Jainism and Buddhism, they do not believe in the Vedas. They do not accept the supremacy of Vedas. Okay, in fact, Jainism to pura completely against the concept of Vedas. Okay, our Buddhism is silent on certain things, but on certain things it is also against, especially the discrimination joda setole thila. Okay, ta against it. But etikona from the point of view of law, okay, acceptance of Vedas with reverence, recognition of the fact that means or ways of salvation are diverse, the truth that number of gods to be worshipped is many. Okay, so it a polytheistic religion, polytheism mane many gods. Okay, poly mane many. Okay, so polytheism mane many gods. So unlike many of the other religion, Abrahamic religions, joda ki mono, okay, theism re believe karanti only one god. Okay, but here there are many gods. Okay. Next, case number 8, that is Erumali versus Punnuswamy. Again, that also in the notes we have, okay, mentioned this. A non-Hindu will become Hindu by conversion. Eta kona na aguru, we have studied that. Semiti Vedic text re conversion into Hinduism ପାଇଁ କୌଣସି ritual ଦିଆ ହେଇନି. ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ ritual ଆଣିଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧିଟା, ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି କି ପଢିଛନ୍ତି? Sir, Arya Samaj. Yes. So Arya Samajis ମାନେ ପ୍ରଥମେ concept of ଶୁଦ୍ଧିକରଣ through the ritual of ଶୁଦ୍ଧିଟା start କରିଥିଲେ. But Vedic text ରେ ସେମିତି କୌଣସି କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, because ଆପଣ ପଚାରି କାହିଁ ଲେଖା ହେଇନି ତାହେଲେ? ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା Hinduism is not a missionary religion. You understand what is a missionary religion? Missionary religion means there will be some people who will go around the world or go to various places and they will ask people to join their religion. ठीक है तो? So through voluntarily join करूँ केते जगह रे involuntarily भी हो, either through inducement हो जी, okay, भाई join करी जा हमें तुमको याद दबू, or through duress हो जी, join ना करियो मैं मार दबू, तुम्हें village रे रही परिवानी, etc etc. ठीक है? So से सब धंधा Hinduism रे नहीं. You will never find, okay, that any Hindu king पुराना हो किए हो से जाइचंती and they will say that you join. जी join करियो voluntarily join करियो. तो concept टा से आथेला. Okay, the founders of Hinduism से तक के founder नाहंती Hinduism रो, जदि हमें देखिबा, we have seen the, okay, the various concepts of Shrutis and Smritis. Okay, तो सेतबेले जे सब लेखिले से माने एटा तक point of view रे नथिला कि someone will, a person will come and join Hinduism. Okay, तेणु Vedic literature रे, शास्त्रिक text रे religious, okay, conversion into Hinduism by कोनोसी ritual नहीं. सेटा later on due to Arya Samaj भी ताको काहे की introduce कला, we had discussed in the class. The actually practical problem कौन होतला सेतबेले, because Arya Samaj it was a Hindu revivalist movement, okay, reformist movement. तो तांकर गोटे main जिंस थिला कि
different communities, okay, Hindu bhitare different caste ro semane marriage kariya pai chahuthile, which was a big problem, okay, jota ki apana temples re ki even court marriage bi kala beluku, okay, jetale jani jauchandi family seta problem habo. So say from that point of view this was, okay, taken into account. Which pale, so first point is, if he undergoes the formal ceremony of conversion of reconversion prescribed by caste or community to which he converts or reconverts, that we had already seen. Ki specifically Hindu hoba pai kichi conversion ki reconversion ceremony darkar nahi, dita requirement thila. Kon thila? First to hela ki se Hindu way of life ku profess kariba. Second hela se jo community re rahuchi, local community, semane taku accept karibe, semane tara chali chalan dekhi se jani paribe ki ha आरो bona fide intention अछि to become a Hindu, okay, malafide intention किछि नहीं, ताले in that case he will join. ठीक अछि, तो ए दिटा थला कोठी भी दिया हैनी कि आपनकर conversion, okay, पाइन किछि गोटे ritual दरकार, कोठी दरकार if you want to join a particular caste or community in Hinduism. ठीक अछि, मु X caste रो join करा पे चाहूची, so से caste रो किछिटा rules अछि, तो in that case I have to undergo, okay, conversion or reconversion. Again this the concept of conversion or reconversion ता हमें भलो रे बुझिथिलु. Conversion का से कहला कि गोटे non Hindu से Hinduism को आछि. By Hinduism here we mean all the four religions, maybe Hindu, Sikh, Jaina or Buddhist. Okay, reconversion कोन होछि, धरंतु a Buddhist is converting into Jainism or Sikhism, okay, ताकू आपण से गोटे ही से it is between a Hindu, okay, community and Hindu community for the you know definition of law, legal purposes ପାଇଁ, तो ताको हमें double conversion रो जो concept ता देखिथिलु, right? So there is no such formal requirement of any ceremony or ritual. Only exception is that if you are joining a particular caste or community, or say caste community रो किछि गोटे requirement अछि, okay, if he expresses a bona fide intention to become Hindu accompanied by conduct unequivocally expressing the intention coupled with acceptance of him as member of community into the fold in which he was ushered in, okay, which we have already seen. Seta mein dekhichu eta a Ponuswamy case 1971. Next come to case number 9, Mahant Bhagwan versus Girijanandan 1972 ro case ta. So custom which is repeatedly brought to the notice of court may be held to be introduced into law without the necessity of proof in each particular case. जोटा हमें starting रे जो प्रथम जिनसटा कहली, okay, कि court पाको दे repeatedly same custom टा आसुची, ताले ताको उसे proof हिसाब ताको proof मागी बेनी से, okay, that is Mahant Bhagwan versus Girijanandan 1972, okay, without the necessity of proof in each particular case, repeatedly brought to the notice of courts, okay, that is the thing which we are discussing. A repeated माने कौन 5 थर होबो 10 थर होबो 15 थर होबो, right? So that the court will decide. Simply किछि तरह hard and fast rule नहीं. Next come to case number 10, that is Surajmani Stella Khujur versus Durga Charan Hansta 2001 ro case right. So now we are moving to the 2000 cases, okay. In light of section 2, okay, clause 2 of Hindu Marriage Act, scheduled tribes could be brought under the purview of the act if a notification is issued to its effect. आमे कोन जानछु normally scheduled tribes से माने तांकर जो customary Hindu law अछि जोटा तांको ऊपर लागू होतिला सेटा तांको ऊपर लागू होबो, okay, सेटा codified Hindu law कि modern Hindu law लागू होबनी, okay. This is one exception कि जदी किछि गोटे notification हेछि, okay, ताले in that case, right, लागू हे परिबो. In other case they would be governed by their customs and such customs have to be proved by clear evidence, okay. Next case 11 person to Hirachand Srinivas Mangaonkar versus Sunanda 2001 ro case ta. The object and purpose of the act is to maintain marital relationship between spouses and not to encourage snapping of such relationships. Eta again ama Hindu Marriage Act re amtaku dekhiba, okay. But last case ta, this is quite important, kana eta 2 borso purana case 2020 ro Vinita Sharma versus Rakesh Sharma. The Hindu branch of Dharma is influenced by theological tenets, okay. What is theology? Study of religion is called theology, okay. So the Hindu branch of Dharma is influenced by theological tenets of Vedic Aryans, ठीक है जी. The Vedic Aryans जो we were talking about the Aryan invasion theory, तो से Vedic Aryans तांकर जा concept थिला,
Okay, Hindu branch of dharma is influenced by whatever those Vedic Aryans have written. Tamane kon? Vedic Aryans have written all the Vedic literature, Rig Veda, okay, and the other Vedas, okay, and all the other Vedic literature, the Aranyakas, okay, the Brahmanas, Upanishads, the Vedic epics, okay, Ramayana, Mahabharata, and others, right? What is not modified or abrogated by legislation or constitutional provisions still prevails. Okay, जोटा कि first to कहती कि जदि कोनोसी गोटे custom की कोन, okay, सेटा ताकू चेंज आपण करि नांती, कोनोसी constitutional provision ताकू चेंज करनी किबा कोनोसी law ताकू चेंज करनी, ताले से Vedic, okay, जहाँ भी वेदस रे किंबा Vedic literature रे लेखा हिची, that will continue. Okay, Vedic हम कहूँ Veda, it comes from the Sanskrit root word vid, vid, ठीक है, विद्वान कहूँ, okay, so vid means knowledge, okay, so from there you have Vedic, Vidwan and others, right? So they're the Vedic Aryans, okay, so जोटा कि आपण change करी नांती, right? Seta continue karibo if it has not been changed by any provisions of either the constitutional provisions or by law. So these 12 cases for this chapter till here. Okay. Excuse me, sir. Hmm. Sir, ये last case टा को जगह रे लिखा हो? A last case टा. Again. So suppose customs or the importance of customary law as a source of Hindu law, or importance of ancient law as a source of Hindu law. ठीक है? Again. सीटी हम एटा लिखि परिबा कि जो जगह रे कि किछि legislation किंबा constitutional provision ताको modify करिनी, जहाँ Vedic literature रे अछि, okay, सेटा ही continue हबो, right? Yes, sir. Yes. What is not modified or abrogated by legislation or constitutional provisions still prevails. Yes. Got it? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So now you take down, okay, some questions. Dita question upon lekhandu related to this. First question. Discuss the principles of a valid custom. Okay. एटा तो सातटा प्रिंसिपल अछि अपन लिखिबे जोडा हम लिखतिलु तापर नेक्स्ट जिंसटा जोठी की आपन को एई जो हम केस लॉ पढिलु ता भितरु भाबी की केस लॉ उडा दबार अछि सो टेक डाउन can customs override legislation, okay, give relevant case laws. गोटे जिन मन रखु जो जगह क्वेश्चन पचार ओके कैन दिस हैपन ओके कैन इट ओवरराइड समथिंग एठी मु तो देई देली आपन जेतु प्रथम प्रथम देखुचंती गिव रेलेवेंट केस लॉस से फ्रेश जदि न थांता भी गिव रेलेवेंट केस लॉस यू हैव टू गिव द केस लॉस फ्रॉम योर साइड यू हैव टू सप्लाई ओके सो प्रॉपर तीनटा जिंस रहला आपनकर गोटे तो हला टू दी पॉइंट से एग्जाम रे क्वेश्चन रे जहां पचारची सेतिकी लिखिबे ताटो अधिका किछि दरकार नै बिकॉज़ यू विल नॉट हैव टाइम नंबर 1 पिला बहुत एंसिलरी जिंस लिखंती किंतु जोटा क्रक्स सेटा को छाडी दियंती कि कॉम्प्रोमाइज करंती सेतर एठी से सीधा पचारची प्रिंसिपल्स ऑफ ए वैलिड कस्टम मते से 7टी पॉइंट ईच पॉइंट सब हेडिंग हिसाब रे लिखिली तार 2 लाइन लिखिबे ओके लेट्स से दिस विल बी फॉर 15 मार्क्स ना मतलब 15 मिनिट रे लिखिबार अछि सो आई एम गिविंग यू द ब्लूप्रिंट नाउ ब्लूप्रिंट ता देबी you people will write it in 15 minutes you take 10 minutes to go through ठीक अछि 10 मिनिट आपण पढिया पे नियंतु ओके मात्र 7टी पॉइंट अछि तो आराम रे से टाइम रे सार दे परिबे तापरे केस लॉस देखिले you write for 15 minutes and
submit now if possible, otherwise ପରେ ତାକୁ submit କରିବେ. Okay, so first part रे कौन लिखिबे पूरा clear अछि. हेडिंग और सब हेडिंग जहाँ आपन को नोट रे दिया जाइछि सेटा देबे. ता ऊपर जहाँ आपन बुझिचंती दुई लाइन लिखिबार अछि सब पई. खाली स्केची माने बहुत कम कम लिखि देले भी हमको मार्क मिलिबनी, राइट. कहना 15 मिनिट रे मते 15 मिनिट रे जनरली A4 पेज मु 2.5 की 3 पेजेस सार देबी. ठीक अछि. एवरेज टाइम नॉर्मल स्पीड रे जे लिखुचंती 6 मिनिट गोटे A4 पेज पे. तेणु से हिसाब रे आपण कैलकुलेट करंतु. दी पेज भी हो जाय छोटो हैंड राइटिंग. ओके, तापरे सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स हमें जदी देखिबा ऑफ ए गुड आंसर एई पर्टिकुलर क्वेश्चन एठी तो आउ आपण लीगल मैक्सिम घरिका एठी एते रहइबनी. ठीक अछि. सो जनरली गोटे क्वेश्चन रे भलो आंसर करिया पई प्रॉपर मार्क पाइया पई, ओके, यू विल फाइंड दैट फर्स्ट हैला कंटेंट इन द सेंस की क्वेश्चन स्पेसिफिक कंटेंट. एग्जैक्टली जहाँ मते पचारची, ठीक अछि, सेतिकी मते लिखिबार अछि. बेसिक टोटली लिखिबार नहीं. उल्टे ताकू आउ टिके इन डेप्थ लिखि दे पारि जदि मो पाए समय अछि. गला तापरे आसिला रेलेवेंट मैक्सिम्स चैप्टर वाइज आउ टॉपिक वाइज मैक्सिम्स लिखिबे. ओडा मेनली रिक्वायर्ड फॉर लाइक टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट आईपीसी. ओके, एठी भी किछिटा अछि बट जेतु एटा हमें बे कस्टमरी लॉ पढुछु तेनु एठी खाली हमरो सांस्कृतिक ये लिखिबो जोटा कि ऑब्वियसली हमें लिखि परिबनी. लेटर ऑन किछिटा पर्सनल लॉ रे एज सच मैक्सिम्स बहुत ही कम अछि. काना मैक्सिम्स उडा आम ओरिजिन रु नु इंडियन ओरिजिन रु नु. ये जो ओरिजिन रो अछि तार किछिटा ही प्रिंसिपल्स हमें आम पर्सनल लॉज रे फॉलो करूछु. ओके, तो एई सब्जेक्ट रे यू विल गेट द लीस्ट नंबर ऑफ मैक्सिम्स कोटा पर्सनल लॉ रे. सो रेलेवेंट मैक्सिम्स. ओके, तापरे आसिला रेलेवेंट केस लॉज. केस लॉ रो रूल कोन जोटा मोस्ट प्रोमिनेंट केस लॉ सेही पर्टिकुलर क्वेश्चन पई सेटा दिया हबो. आउ लेटेस्ट केस लॉ गोटे दबा पे हमें चेष्टा करिबा ताले पूरा बैलेंस हमर हे गला टू गेट गुड मार्क्स. ओके, आउ नंबर 4 हैला कोन डायग्राम. जदि एटा 15 मार्क 10 मार्क क्वेश्चन अछि रेलेवेंट डायग्राम. ओके, ट्री डायग्राम हो फ्लो चार्ट हो जेमति का मु एबे मते एमती अभ्यास करिवार अछि कि जहां भी क्वेश्चन हबो मु सब पय डायग्राम करिवि. ताले कोन आगु को गले मु डिस्क्रिमिनेट कर परिबि कि को क्वेश्चन रे डायग्राम रखिवार अछि को क्वेश्चन रे डायग्राम मते दरकार नै. बट नाउ जस्ट टू बिल्ड अप दैट स्किल फॉर एवरी क्वेश्चन यू शुड गो फॉर ए डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम. आउ डायग्राम ता लेबलिंग करिवि. Okay, so let us discuss this question. To discuss the principles of valid custom, you know that ja principles achi सब ऊपर दी तीन लाइन अपन लिखि परिबे. Can customs override legislation? तो एटा yes no भलिया देबेनी. ठीक अछि. तो तारो chronology दबार अछि, right? That in 1868 कि कोन से फर्स्ट जा थिला. Okay, so in this case versus this case, okay, the court held that customs will override written text. Okay, but should not be against legislation, right? तापर नेक्स्ट आसीबे कि जहां हमर अछि, ओके, सही हिसाब रे प्लस लास्ट को आसीबे, राइट. 2020 रो जो केस ता जोडा में देखिलु सेतरे कोन कोआ गला सेतरे या कोआ गला कि जदी किछि, ओके, आपनकर वैदिक, ओके, तांकर वैदिक आरियंस कर कांसेप्ट रो सेटा नियाइछि. आ जदी किछि भी कॉन्स्टिट्यूशनल की लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन की लॉ और प्रोविजंस अपन ताको चेंज करना है ताले से वैलिड रहइबो. ठीक अछि. दैट आल्सो यू हैव टू गिव से 2020 रो, राइट, केस ता अपन दे परिबे. केस हमें एमति 10 टा दे परिबानी. केस ता हमें मैक्स इज 2 मोस्ट इंपोर्टेंट केस लॉ रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड इफ यू नो, ओके, जो रिसेंट केस लॉ इफ यू नो रो तो कथा ही नहीं कहीं ना सेटअप आपन जदी पाउचन तो भलो निजे आडू रिसर्च करचन बहुत भलो. आपन जदी करि पाउनंते जेमति पीडीएफ दियाला सेमति मु सब इट विल टेक सम टाइम बट फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड फॉर एवरी चैप्टर आई विल डू दैट. ओके, आपन काम हला सेटा आपन को जो पर्सनल नोट्स रे ताको लिखिबार अछि. ओके, मु फर्स्ट क्लास रे ओरिएंटेशन क्लास नैतली एटा क्लियर करथिली. पर्सनल नोट हैला मैंडेटरी. आपन आपन नॉलेज बेस जत्ते हितौ मे बी आपन 3 थोर इंटरव्यू रिसर्च दिया करू. I am not concerned, but everyone needs to have their personal notes.
and that notes have to be updated. आपन से पंडा सर गोटे एग्जाम मु जस्ट देखुथि सेटा कि नोट टा गोटे साइड रे करंतु गोटे साइड रे फांका रखंतु. दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज़ हम बहुत गुडे इनसा ऐड करिबा त जहा जहा एबे नुवा नुवा जिंस होउची. ओके सो योर आंसर शुड बी डायनामिक, इट शुड बी इवॉल्विंग. ठीक अछि से जुग गला कि भाई 10 वर्ष आगु जहा लिखा हितला को गाइड रो नै आसली ताकू मु पढी चलची. योर नॉलेज बेस मे बी वेरी गुड बट ताकू जदी आपण अपडेट करू नांती आपण आंसर रे डायनामिक कंटेंट रहुनी एलिमेंट्स रहुनी. It is very difficult nowadays for the evaluators to appreciate it. Okay, बुझी पाले कोन ताले गिव रेलेवेंट केस लॉस तो ए दुटा केस लो आउ जदी आपण किछ ऐड कर परियो करंतु बट 15 मिनिट्स से साडीबे. Okay, so it is 7:30 now. You take 15 minutes to study and 15 minutes to write. Okay, so I will mute my mic. 8:30 कि जे ता आगुरु पठेबो. You can also send it to WhatsApp के जण कोथिला हम immediately पठेइ परनु से थरे. तो ठीक अछि आपण ताको गोटे पीडीएफ फाइल करी कि मते WhatsApp रे पठेइ दियंतु. ओके, क्लास सरला परे से लिंक रे अपलोड कर दे. लिंक रे अपलोड करिवार लाभटा हैला परमानेंटली सेटा रहिला. मते जदी डेरी भी हे जाउची ताको इवैल्यूएट करिया भी सेटा we will not lose it. Okay, otherwise कौन ना मोर WhatsApp every 3-4 days से फ्लैश होची तो मु जदी ताको डाउनलोड करि नथिबी ताले सेटा you will miss it. So से लिंक रे गूगल डॉक लिंक रे अपलोड कर देटा सब टू बेस्ट. बट इमीडिएटली एबे जे इवैल्यूएट ओके करिया पे चाहउचंती बाय 8 o'clock आपण पठेले मु देखि कि सेटा आपण को ओके ता फीडबैक टा दे देबी. All of you understood what will be the components of the answer? समस्ते बुझी पाले कि किछि डाउट अछि दिया ऊपर पचार दियंतु. ओके देन स्टार्ट स्टडिंग इफ यू वांट. एज आई टोल्ड यू जेतोले लेखिबे 15 मिनिट पई नो रेफरेंस. यू मे टेक मोर टाइम टू स्टडी किछि असुविधा नै. आपण मते के देर रे पठंतु काली पठंतु पढना पठंतु. बट द थिंग इज दैट योर राइटिंग स्किल शुड डेवलप. ठीक अछि तो लेखिला बेले नो. ओके just do not refer to the material. Okay, so I'll switch off my mic now. Okay, I'll be back around 7:50. Right, you please start writing or at least go through the okay contents whatever has been given in your note.
Yes, are you done? How like 10 minutes more? Okay, depending on upon केबे लिखिया में start करथिले. Okay, just clock yourself. That is also very important. एमती नहीं कि 15 minutes टा 25 minute ହେଇଯିବ. Okay, କାରଣ exam ରେ ତମକୁ ସେତିକି liberty ମିଳିବନି. Right? Within 15 minutes लिखिबे. ଆଉ ଉପରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ, okay, just write how many minutes you have taken.
Okay, fine. I think we are out of time now. So those who have written can send it to me. Okay. If you're sending in the link, just inform me. Else, you can just convert it to one single PDF and WhatsApp it to me. ନା just କରି opposed to public policy ସେ ଲେଖିବେ କି general public policy ଯୋଉଟା ଥିବ ତାକୁ ତା violation ହବା କଥା ନୁହଁ ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ତ ସେଇ କେସ୍ ର ଭିତରେ ହିଁ ମାନେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଭିତରେ ହିଁ କେସ୍ ର ଗୁଡା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି so it is fine ତାହେଲେ ସେଇ second part of the question ବି ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପଚାରିଲା can customs override legislation give relevant case laws ତେଣୁ ମତେ ସେଇ ଯୋଉ can custom override legislation
ता ऊपर टिके लिखिया पड़ियो ओके तो ता एवोल्यूशन तो स्टार्ट करिवे कि फर्स्ट केस टा जोड़ा थिला 1968 रे ना कि से ब्रिटिश पीरियड रे तांकर कहर थिला कि सेटा ओवरराइड करिवो जोटा कि इन टेक्स्ट जोटा थिबो से लॉडा ओवरराइड करिवो बट नॉट लेजिस्लेशन हां सेठू स्टार्ट करिके आ तापर आ गोटे दिटा दे दे परिवे अपन किंतु सब पॉइंट रे अपन केस रो दे दिछन दैट इज आल्सो फाइन किंतु एई क्वेश्चन टा आंसर ही हाँ सेटा लिखिबे सब बेले जनरली संस्थान रखंतु सपोज ए क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स और थ्री पार्ट्स ठीक अछि तो आपण गोटे ओवरऑल आपण लिखिले ईच पार्ट ता स्पेसिफिकली आपण एड्रेस करचंती कि फॉर एग्जांपल इट इज सेकंड पार्ट रे कहला कैन कस्टम्स ओवरराइड लेजिस्लेशन सो देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट आंसर टू इट गोटे नेक्स्ट पैराग्राफ करिकि मते लिखिया पड़िबो कि कस्टम्स कैन ओके ओवरराइड legislation or not so the evolution to start karibe so generally customs cannot override legislation but in certain cases where for a particular subject okay there is no legislation or constitutional provisions okay then the customs will prevail to seita apan ko case re heitila seita apan ko dekhibar अछि बुझि परले तो each जो पार्ट अच्छे हमर क्वेश्चन रो ईच पार्ट को मते स्पेसिफिकली आंसर करिवार अछि ओके ठीक अछि सेटा खाली गोटे चेंज हो ओके यस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स बाकी इन केस यू आर सेंडिंग मी इन दैट लिंक ताले मते टिके जणैबे ताले मु से लिंक टाकू ये करिम ना ना सन चल हाँ ओके प्रद्योतिक आपण देखो तर फिगर टा जोड़ा करचंती सर हेइनी ठीक से ना ठीक अछि सेटा आपण ताको फॉर एग्जांपल फर्स्ट इट शुड बी एंशिएंट रे आपण सेठी गोटे केस लो दो पई चाहिचंती थर्ड ताको स्टेज रे करिकि बट सेटा माने एते टाइम आ पई दरकार नै सेटा न देले सेटा आपण लिखिला जोठी लिखि चंती सेठी ताको लिखिबे ठीक अछि त सो बट कांसेप्ट ठीक अछि आपण एमती करचनी फिगर टा ठीक अछि ताको ताको तार लेबलिंग करचंती ठीक अछि सेकंड पार्ट टा भलो से हेइनी आउ गोटे जिनस हला ए जो अपन लिखले थंत कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मतुला रामलिंगा सेठी टिके हमर इफ यू कैन रिमेंबर द ईयर आल्सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ठीक अछि जदी अपन वर्षटा मन रख परिबे ना एटा प्री इंडिपेंडेंस केस टा ना हां आज्ञा आज्ञा ओके फाइन ओके सो we will stop with that then आपण माने जो माने भी तरतर है कि लिखियर नहीं the thing is that you write to माने आपण प्रॉपर ईयर रे लिखंतु ओके 15 मिनिट्स रे लिखिबे जति पढिया होता पढी के लिखंतु किछ असुविधा नहीं एंड देन सेंड इट टू मी ओके तो तापर पठे देबे ताको I'll just go through it fine so we'll stop then you write and send it to me if you're sending through that link just inform me okay कि मु लिंक रे पठे देबो okay fine सर को इंग्लिश आंसर टा पठैथिली लिंक हाँ हाँ आपण पठे छ देख मु देखि देबी यार इधर लिखि की अच्छा लिंक रे आ गुटे इनस काइना लिंक रे तो इधर यू राइट योर नेम इन द फाइल सेटा टिके बेसी टाइम लागिवो नले खाता ऊपर ना आउ आपनकर व्हाट्सएप नंबर टा लिखि दे खाली ना आज्ञा लिखते चलिवो व्हाट्सएप नंबर तो समस्त मोर मो पाखे अछि जस्ट राइट योर नेम ठीक है आज्ञा ऊपर खाली नाटा लिखि देबे सो दैट आपण जदी फाइल नेम टा निज ना रे दउ नांती ताले भी मु जानि परि का दि तीनटा खाता सेमती अछि सेटा काहार मु जानि परनी करेक्शन कला पर काहा को पठेई मु जानि परनी ओके सेटा हला गोटे जिंस ताको पुनी कोन ताको बाहर करियो बा पुनी ताको से गूगल ड्राइव रु खोजिया पड़ियो कि से जो अपलोड करथिले से तांकर कोन कोन क्रेडेंशियल्स थिला तांकर
Gmail ID कौन थिला, so it takes time टिके अधिका नहीं किया. Just write your name on the first page. Page ये ऊपर है, कल नाटा लिखी दे. Okay. Okay. Okay, sir. Okay. Fine. So we'll stop then. Thank you, sir. Namaste. Got a minute. Just let me just finish the recording.